Hello everyone. Today is 19 September 2025. Let's discuss UPSC relevant news from the Hindu. First news is Saudi Pakistan Defense Pact. You can quote in the answer what happens when a single pact between two nations has the power to redraw the entire security map of West Asia. वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स हमेशा से एक बैलेंसिंग एक्ट रही है। किसके लिए? इंडिया के लिए। दैट इज बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ है सऊदी अरब विच इज़ अवर ट्रेडिशनल अलाई, जहाँ से हमें एनर्जी इंपोर्ट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ है ईरान, जिससे भी हम अपने टाइज स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट ड्राफ्ट हो रहा है, जिसमें अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ, अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ क्लोज हो सकता है। तो रीजनल डायनामिक्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ये पैक्ट अगर साइन हो गया तो एक नया चाइना पाकिस्तान सऊदी एक्सिस उभर सकता है, जो ईरान और गल्फ के पावर बैलेंस को चैलेंज करेगा। इसी वजह से इंडिया को लुक वेस्ट पॉलिसी और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ट्रिकी बन जाएगी, क्योंकि हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ कि any aggression against one would be treated as an attack on both. Pakistan embassy said some report misreported the arrangement. India's West policy faces a complex balancing act between traditional allies like Saudi Arab and strategic partners, with potential shift in regional dynamics and imports on its energy security. India's bilateral defense cooperation with UAE, Saudi Arab, typically focuses on training, joint exercises, defense trade, generally avoiding collective defense clause, unlike the reported Saudi-Pakistan pact. A Saudi-Pakistan defense pact could significantly alter the regional security architecture, potentially intensifying existing rivalries or creating new geopolitical alignment, particularly concerning Iran and other Gulf states. Prelim pointers and traps. Not a NATO-style treaty. No automatic Article 5 clone unless pact explicitly codify it. Okay, so this is not NATO-style treaty. Distinguish from existing bilateral training arms deal in the region. Collective defense clause: one attack on one trigger joint response. Pakistan has a history of close military and economic ties with GCC states, often providing security assistance and military personnel in exchange for financial aid and oil. This pact could strengthen an emerging China-Pakistan Saudi axis, leveraging China's growing influence in Middle East and its all-weather friendship with Pakistan, potentially challenging established power structure. The development highlights the continuous need for India to calibrate its look west policy, engaging the Middle East alongside its activist policy, navigating complex regional geopolitics to secure its strategic interest. So we have to focus on look west also. So the next, India's first reaction studying the pact. So this is the news is continuing. Ministry of External Affairs said that India is studying the Saudi-Pakistan Defense Pact reports. India pursue a मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, दैट इज हम किसी एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं है। हमारा क्या है, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी इन वेस्ट एशिया, fostering strong ties with diverse regional powers, including both Saudi Arab and Iran, to secure its strategic ties. Maintaining a delicate balance in relation with both Saudi Arab and Iran is cornerstone in India's foreign policy, essential for regional stability and India's energy security. Energy security heavily influenced India's foreign policy, particularly its engagement in West Asian region, as a significant portion of its oil and gas imports originate here. क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट वेस्ट एशिया से करते हैं. Ministry of External Affairs comments policy signaling, not formal recognition. Okay, watch for implication on West Asia outreach and defense partnership. Union Ministry of External Affairs is the union ministry managing foreign policy and consular affairs. Diplomatic language serve as a crucial tool for conveying policy signals and navigating complex international relations, often implying more than what is overtly stated. The large Indian diaspora in Gulf nation play a
vital role in strengthening bilateral ties through remittances, cultural exchange, and people-to-people connection, influencing foreign policy. India commitment to strategic autonomy, guiding its foreign policy decisions, allowing it to navigate a challenging geopolitical landscape and pursue national interest. यानी कि हम मल्टी अलाइनमेंट से क्या कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं. ओके, you can quote in the answer that sometimes silence in diplomacy speaks louder than words. And India's first reaction to Saudi Pak pact is exactly that. Next news is US revokes visas of Indian executives. You can quote in the answer that when boardroom visas get cancelled, it's not just travel, it's a signal that global trade networks are under scanner. यूएस ने कुछ इंडियन एग्जीक्यूटिव्स के वीजास रिवोक किए. एलिगेशन ये था कि उनकी कंपनीज ने फेनाटाइल प्रिकर्सर्स केमिकल्स को मिसयूज करने दिया थ्रू फ्री ट्रेड जोन्स. फ्री ट्रेड जोन्स एक तरफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका मिसयूज इलीगल शिपमेंट्स के ये भी होता है. इससे इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री जो दुनिया भर में ट्रस्टेड है, इसकी रेपुटेशन क्या हो गई है, खतरे में आ गई है. लेकिन इंडिया और यूएस दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन है ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन होता है. इस तरह के इंसिडेंट्स एक रिमाइंडर है कि रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना इलिसिट ट्रेड को रोकना काफी ज्यादा क्या है, मुश्किल है. तो यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली said visas of some Indian executives were revoked over alleged fentanyl precursor shipments routed via free trade zones. Free trade zones offer economic benefit but also present significant security challenges due to potential misuse for illicit transshipment. India and US maintain strong bilateral cooperation, including intelligence sharing and coordinated enforcement to combat narcotic trade. Allegation of illicit chemical routing can severely impact the reputation and export market access of Indian vital pharmaceutical industry. Visa revocation is not equal to chemical criminal conviction. That is, ये नहीं हो गया, प्रूव नहीं हो जाता कि आपने कोई क्राइम किया. क्रिमिनल कन्विक्शन मतलब कि कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ अभी तक. Free trade zones can be misused for transshipments. Fentanyl precursors, chemical used to synthesize the opioid fentanyl. Okay. Global trade trafficking involves complex network. India actively monitors its supply chains to prevent illicit trade. Robust regulatory frameworks are essential for controlling chemical exports, particularly those with dual use potential as drugs precursors. Effective international cooperation, including treaties and joint operations, is vital for strengthening global drug control mechanism. Our next news is US to revoke Chabar sanctions waiver. You can quote in the answer that a single port can decide whether a nation connects or gets cut off. And for India, that is Chabar. यूएस ने अनाउंस किया है कि वो छबार पोर्ट के लिए दिया हुआ सैंक्शंस वेवर को रिवोक करेगा अंडर द IFCA, दैट इज ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, इफेक्टिव फ्रॉम 29 सितंबर 2025. छबार पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली वाइटल फॉर इंडिया टू एक्सेस अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान. ठीक है.
एंड छबार का रोल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू और भी क्रिटिकल है, क्योंकि इससे ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट दोनों काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन सैंक्शंस की वजह से इंडिया की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई अफगानिस्तान तक डायरेक्टली क्या होगी, इम्पैक्ट होगी। यहाँ चैलेंजेस ये है कि इंडिया को अपने यूएस पार्टनरशिप और ईरान एंगेजमेंट के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एनर्जी और जियो इकोनॉमिक्स दोनों स्टेक क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है। Sanctions directly impact India's ability to use Chabahar for trade and humanitarian aid to Afghanistan. Chabahar is not part of CAATSA waiver. Okay, this is IFCA, that is Iran Freedom and Counter Proliferation Act. India signed a 10-year lease in May 2024. IFCA waiver, US carve out permitting activities otherwise sanctionable. India's engagement with Iran, including energy import, is often complicated by US sanction. New Delhi consistently seeks to balance its strategic partnership with US against its geopolitical and economic interest in the region. The INSTC aims to reduce transit time and cost for trade between, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. CGI on true secularism and Khajuraho PIL. You can quote in the answer. Secularism in India is not about keeping religion out, but ensuring every faith gets equal space. CGI BR Gavai clarified that remarks in Khajuraho Vishnu Idol PIL were contextual. Courts cannot order changes at a protected monument under Archaeological Survey of India. जस्टिस BR गवई ने खजुराहो आइडल PIL के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिफाई किया कि कोर्ट किसी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट के रिचुअल्स या प्रैक्टिस चेंज करने का ऑर्डर नहीं दे सकता. इंडियन मॉडल एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है जो वेस्टर्न सेपरेशन से अलग है. यहाँ स्टेट एक्टिवली इंश्योर करता है कि सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले. ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन लॉस और इवॉल्विंग रिलीजियस क्लेम्स टकरा जाते हैं. खजुराहो जैसे मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और उनको प्रिजर्व करना इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है. साथ ही आर्टिकल 25-28 कॉन्स्टिट्यूशनली रिलीजियस फ्रीडम गारंटी देते हैं. चैलेंजेस है कि इनमें एक बैलेंस मेंटेन करना कि हेरिटेज भी बचे और फेथ सेंटिमेंट्स की भी क्या हो, रिस्पेक्ट हो. तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स जो हमें याद रखने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर ASI प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन इंटरवेंशन, ओरल ऑब्जर्वेशंस इज नॉट इक्वल टू बाइंडिंग ऑर्डर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी मैनेजिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. Archaeological Survey of India is responsible for archaeological research and protection, preservation, maintenance of ancient monuments and archaeological sites, remains of national importance. India is a signatory of UNESCO World Heritage Convention, has an international obligation to protect its sites like Khajuraho. 25 and 28 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिसेस प्रोपगेट रिलीजन वाई प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया सेकुलर रिपब्लिक. नेक्स्ट न्यूज इज आर्मी स्केल्स अप ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन. You can quote in the answer. In the wars of tomorrow, every soldier might carry not just a rifle, but a drone. Indian Army accelerating drone induction. COS General Upendra Dwivedi reviewed a facility at Likabali, Arunachal Pradesh. Goal: make every soldier a drone operator. Drones are transforming modern warfare by enhancing surveillance, reconnaissance, and precision strike capabilities. India's defense modernization prioritizes integrating advanced technologies like drone for enhanced operational readiness and self-reliance. They significantly improve border surveillance. Okay. Training hub include IMA, Indian Military Academy, Dehradun, Infantry School, Mo, OTA, Chennai. Do remember it. बिकॉज UPSC आजकल डिफेंस से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा. डिस्टिंग्विशिंग
loitering munitions versus ISR drones. Okay. And means enrichment, the push for indigenous drone development strengthen India's strategic autonomy and reduce reliance on foreign military hardware. Training every soldier as a drone operator reflect a shift toward decentralized technological warfare, enhanced battlefield awareness. Drones provide a cost-effective solution against numerically superior adversary, enabling asymmetric warfare advantage. Delhi court set aside ex parte gag order. A Delhi district judge held the September 6 ex parte injunction against journalist in Adani Enterprises defamation suit unsustainable. Lack of hearing noted. Press freedom in India is enshrined in Article 19(1)(a), but is subject to reasonable restrictions. ये याद रखना पहला पॉइंटर है. Including defamation law, creating a legal tension. Due process in civil litigation ensure fair treatment through established legal procedures, including proper notices and opportunity to be heard. Crucial for protecting rights, achieving a balance between individual right to protect their reputation and public interest. Ex parte orders require strict necessity. Intermediaries can be asked to remove content only per the due process. Ex parte injection, temporary order without hearing the opposite party. So do remember this key term. And mains enrichment material, judicial restraint, emphasizes court deferring to legislative and executive branches, particularly in matter of media regulations to avoid overreach. Media scrutiny is vital for ensuring corporate accountability, exposing potential misconduct, and informing the public about business practices. Article 19(1)(a) of the Indian Constitution guarantee freedom of speech and expression, a fundamental right critical for democratic society. Okay. National Commission for Scheduled Tribe form panel on 2005 duties. Set up NCST set up a internal committee plus 3 subcommittees to operationalize 8 additional duties notified in 2005. For example, minor forest produce, PISA. Constitutional provisions like Article 338A, 244 and the 5th, 6th schedules protect tribal rights and ensure their welfare. Minor forest produce is critical source for tribal livelihood, providing food, medicine and income through sustainable collection practices. The 5th schedule applies to tribal area in 10 state. PT pointer, do remember it. And the 6th schedule cover tribal area in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. That is ATM money. You can remember through this mnemonic. Early annual report noted stuff fund constraint. Now moving to a report on discharge. Don't confuse NCST with NCSC. PISA 1996 extends panchayats to schedule area with tribal safeguards. Okay. Implementation of the Panchayat Extensions to Schedule Area Act often faces challenges such as lack of awareness, insufficient resource devolution, and poor institutional capacity. Key institution mechanism for tribal welfare include the NCST, tribal advisory councils, and various government schemes focusing on education, health, and economic development. Decentralized governance in tribal area primarily through PISA aims to empower Gram Sabha. Do remember it. With significant control over local resources and development activities. Supreme Court fines Delhi Public Work Department on manual cleaning. Supreme Court imposed rupees 5 lakh penalty on Delhi PWD for violation of order against manual sewer cleaning near the court. Manual scavenging is profound social evil with a strong legal framework in place to prohibit. The Supreme Court action underscores the importance of upholding the dignity of labor, a core constitutional value. This issue highlights critical aspect of urban sanitation and public health management. Manual scavenging is banned. Do remember it. Liability can flow to contracting departments. Okay. PWD, State Work Department, handling construction maintenance. Judicial activism in social reforms. Implementation of anti-manual scavenging law. Technological adoption in sanitation sector. Next topic is EPFO launches Passbook Lite plus Annexure K online. You can quote in the answer. A pension slip may look small, but for millions of workers, it represents dignity,
security and trust in the system. Trust in the system. ओके, सो ईपीएफओ ने पासबुक लाइट और ऑनलाइन एनेक्सर की लॉन्च किया है। पासबुक लाइट एक सिंप्लीफाइड समरी व्यू देता है जिससे एम्प्लॉयज़ अपना प्रोविडेंट फंड इजीली चेक कर सकें। एनेक्सर के ऑनलाइन होने से अकाउंट ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया है। ये स्टेप डिजिटल गवर्नेंस को बूस्ट करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी एक इन्हांस करता है। लेकिन एक रिमाइंडर भी है कि ईपीएफओ मेजरली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर तक क्या है, लिमिटेड है, जबकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी गैप अभी भी क्या है, बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट के डिजिटल रिफॉर्म एफर्ट जैसा ये इनिशिएटिव कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी दोनों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रियलिटी में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए हम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रोल्ड आउट पासबुक लाइट समरी व्यू एंड enabled online annexer K transfer certificate. EPFO digital initiative like Passbook Lite exemplify digital governance, leveraging technology to enhance public service delivery, transparency, citizen engagement. As a defined contribution social security scheme, EPFO plays a crucial role in labor welfare, helping employees save for retirement. Innovation like Passbook Lite enhance financial inclusion by providing easier access to financial information and services for wider population. Reduce dual login frictions. Detailed view remain on the full passbook portal. PF long-term defined contribution social security. Annexer K statement enabling EPF transfer between accounts. Okay. India Social Security reform aims to expand coverage and streamline benefit, simplifying compliance, contribute to ease of doing business. EPF primarily cover the organized sector, highlighting disparities with the unorganized sector. And the next news is PM Modi calls Nepal PM Karki. PM Modi said India's support for Nepal politics step is a steadfast, both leaders satisfied with the mutual understanding. Okay, so you can quote in the answer that sometimes a simple phone call says more about diplomacy than a 1000-page treaty. ठीक है, तो पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम कार्की को कॉल करके अश्योरेंस दिया कि इंडिया का सपोर्ट उनके पॉलिटिकल स्टेप्स के लिए स्टीडफास्ट है। इंडिया नेपाल टाइज की फाउंडेशन एक ओपन बॉर्डर, शेयर्ड कल्चर और कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ट्रेड इम्बैलेंसेस। इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इसी रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रायोरिटी देता है एड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। साथ ही नेपाल के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को इंडिया के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स में यूज करना एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन बैकड्रॉप ये है कि चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस नेपाल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस को और ज़्यादा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर दैट इंडिया नेपाल रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन बॉर्डर, शेयर्ड कल्चर and common security interests, but also faces challenges like border dispute and economic imbalances. India's neighborhood first policy prioritizes friendly relations and development cooperation. Deep-rooted cultural and civilization ties, including shared religious practices, linguistic similarities, and historical connections, form the bedrock of India-Nepal relations. Prelim pointers: India-Nepal ties framed by 1947 50 treaties, open border, hydropower link. Okay. Diplomatic readout: official summary of leader level calls or meetings. So this is diplomatic readout. Do remember this key term. Cross-border connectivity is fostered through various projects, including integrated checkposts, railways, and energy transmission lines, facilitating trade and people-to-people contact. Significant hydropower potential in Nepal, particularly from rivers like Mahakali, offer opportunities for mutual energy benefit and joint projects between India and Nepal. China increasing economic and strategic engagement in Nepal is growing geopolitical factor influencing regional dynamics and India's foreign policy approach. And next news is heavy rain, Uttarakhand, Chamoli and Hyderabad. Uttarakhand news, at least 4 deaths
plus 50 plus missing after heavy downpour in Chamoli. Hyderabad news, intense rain led to waterlogging. Video shows a man washed away in flooded Nala. Climate change increases the frequency and intensity of extreme rainfall events globally, including cloudburst and flash floods in India. Mountains regions like Uttarakhand are highly susceptible to landslide, flash floods, and debris flow during heavy rains due to unstable geology and steep slopes. Rapid urbanization, encroachment on natural drainage system, nalas, inadequate infrastructure contribute significantly to urban flooding as seen in Hyderabad. Chardham, that is Himalayan zone, is equal to landslide prone. IMD color codes. Urban flooding is equal to drainage plus encroachment issue. Cloudburst, more than 100 millimeter rainfall in an hour in a localized area. Okay. Effective early warning system using meteorological data and localized alerts are crucial for timely evacuation and minimizing casualties. Building resilient infrastructure including improved drainage, flood resistant construction, slope stabilization. National Disaster Response Force and State Disaster Response Forces are critical for search and rescue operation relief distribution. Next news is electoral disputes, Rahul Gandhi versus ECI. Okay. You can quote in the answer that elections are only as fair as the list they are built on, and voter rolls are the foundation. Okay. राहुल गांधी ने कर्नाटका के अलांद एरिया में एलेज्ड वोटर डिलीशन पर ईसीआई को टारगेट किया, जबकि कमीशन ने चार्जेस को बेसलेस कहा और स्टेट सीईओ ने बोला कि डेटा पुलिस को हैंडओवर हो चुका है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, डाटा एंट्री एरर्स और फॉर्म 7 मिसयूज की वजह से रोल्स को क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, टफ होता है। इंडिया में ईसीआई की क्रेडिबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी क्रिटिकल है, लेकिन साथ ही बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर वेरिफिकेशन, टेक सेफगार्ड्स, ऑडिट ट्रायल्स और ट्रांसपेरेंट ग्रीवांस रिट्रेसल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ट्रस्ट क्या होता है, बनता है। तो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी रिलाइज ऑन एक्यूरेट एंड updated voter rolls, which are crucial for free and fair election, preventing voter suppression or fraudulent voting. Election Commission of India is constitutional body responsible for conducting elections, and its independence from executive influence is vital for its credibility and impartiality. Maintaining accurate voter list is challenging due to factors like frequent population movement, data entry error, proper execution of deletion procedures. For example, Form 7. Rahul Gandhi alleged CEC shielding wrongdoers over alleged Aland Karnataka deletion. ECI termed the charges baseless. CEO response. State Chief Election Officer said all data in Aland case was handed to police. Form 7 is for deletion, not addition and correction. ECI supervises execution via state machinery and BLOs. CEO, State Election Authority under ECI superintendence. BLO, booth level officers, field agent for role management. CEO, that is Chief Electoral Officer of state. Democratic governance requires a careful balance between political accountability of elected officials and institutional autonomy of bodies like ECI to ensure fair processes without political interference. Technologies such as electronic voting machines and digital voter registrations enhance efficiency but also introduces new challenges related to data security, transparency, and public trust in electoral processes. Ongoing electoral reforms aim to strengthen democratic governance by enhancing transparency, reducing malpractices, ensuring inclusivity, and increasing voter participation in the electoral system. Assam FIR over BJP video during BTC polls. You can quote in the answer, a 10-second video can shake a campaign and test
the guardrails of democracy. असम में बीटीसी दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पोल से पहले बीजेपी के एक सोशल मीडिया वीडियो पर क्या हुई, एफआईआर दर्ज हुई। ये इंसिडेंट दिखाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी और सोशल मीडिया रेगुलेशन दोनों को ग्राउंड पर इन्फोर्स करना कितना ज़्यादा जरूरी है। बीटीसी दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जैसे 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल्स में एथनिक सेंसिटिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, हाई होती हैं, इसलिए कंटेंट का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इलेक्शंस में नैरेटिव तेज किससे भागता है, दैट इज फ्रॉम दीज टाइप ऑफ थिंग्स। पर लॉ एंड ऑर्डर और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स उस रेस की जो होते हैं लक्ष्मण रेखा होते हैं, उनके बिना फेयर पॉलिसी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ठीक है, कि जो नैरेटिव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हैं, बट जो एमसीसी है वो क्या करता है, इसकी लक्ष्मण रेखा है, तो जो इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, असम कांग्रेस फाइल्ड एन एफआईआर over a BJP social media video ahead of BTC Bodoland Territorial Council polls. The incident highlights the importance of moral code of conduct in election and the growing need for social media regulation in electoral context. Furthermore, understanding the role of autonomous council, tribal self-governance is crucial as the Bodoland Territorial Council operate under the 6th schedule. BTC Bodoland Territorial Council 6th schedule body model code sensitivities applies. FIR is under CRPC 154. Okay. 6th schedule autonomy for tribal areas that is ATM money. Okay, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and means enrichment, federal structure and special provisions. You can quote this in federal structure, special provision, ethnic conflict and political solutions. Okay, so this was all about today news. Thanks for watching. Thank you.